Throughout recorded history, saints and mystics have spread one universal teaching to all of mankind: love one another. Seva, or selfless service, is one of the most profound expressions of love. When we look upon the whole of humanity as our brothers and sisters, regardless of caste, creed, or status, when we serve each other in a selfless manner, without any desire for praise or reward, when we give a part of ourselves to help those in need, we are loving one another. And in doing so, we are loving the Lord Himself. Maharaj Charan Singh has said, If we can do anything to help anybody, we should. That is our duty. We are meant to help each other. Humans are meant to help humans. Who else will help? Birds and lions won't come to help you. You have to help each other. We should have to be source of strength to each other. the onset of the COVID-19 pandemic has brought about an unprecedented situation across the world, causing devastating changes, hardship, suffering, and death. On the 24th of March 2020, a historic nationwide lockdown was enforced by the Government of India in an effort to control the spread of the virus. This prompted hundreds of thousands of migrant workers to flee their cities and go back to their villages. But because bus and train services were shut down overnight, many traveled by foot. For days they walked, sometimes hundreds of kilometers to reach their villages. This resulted in hundreds of thousands of people being left stranded with no food and no shelter. Where were they going to go? How were they going to survive? Many organizations have responded to this tragic situation. Among them was Radhaswami Satsang Vyas. The society opened its doors all across India and offered its facilities in the service of the nation in coordination with the district administration. Under the instructions of the present master, work started immediately. Radhaswami Satsang Vyas volunteers were quickly mobilized to set up and transform their centers into quarantine facilities and shelters for migrant workers. Massive arrangements were also made at Dera Vyas and at about 250 Radhaswami Satsang Vyas centers all over the country to prepare individual food packets which were distributed to the needy masses through the district administration. To maintain the general hygiene and prevention of COVID-19, about 200,000 face masks and more than 1,000 liters of hand sanitizers were distributed in the villages around Dera. The present master, Babaji, said, "We are in touch with all the officials of the district administration here. Whether they are dealing with food or managing isolation wards or concerned with providing staying facilities for people. We have made arrangements for all kinds of facilities for everyone. In the future also, whatever we have belongs to the Sangat, and for the Sangat, our doors shall always remain open." Across 11 states, Radhaswami Satsang centers are being utilized as accommodation shelters, where volunteers are serving day and night, looking after migrant laborers stranded due to the national lockdown.
Hygiene measures are strictly implemented, and sanitizing procedures are conducted and verified by municipal corporation staff. Bedding and queuing arrangements are organized based on social distancing protocols. Healthcare teams screen all incoming people for symptoms of COVID-19. Those who are unwell are immediately sent to nearby hospitals for treatment. To ensure their comfort and convenience, a variety of services and facilities to the very last detail are made available to all guests staying at the shelters. Hot meals are served 3 times a day, along with tea and snacks. Clothes, slippers and towels are provided free of charge. A hygiene kit consisting of soap, detergent, a toothbrush, toothpaste, shampoo and oil, face masks are also provided. Sanitized toilets and bathing facilities are made available. Complete bedding is provided to each individual, including mattresses, sheets, pillows, and blankets. Mobile phone charging stations are conveniently accessible, and medical assistance and psychological counseling are available for anyone in need. In addition, social awareness documentaries and videos inspiring positivity, hope, and compassion are shown regularly. In the news, it was reported, एक शेल्टर होम के बाहर हैं तकरीबन 450 से भी अधिक जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस जगह में एंट्री करने के पहले थर्मल स्कैनिंग की जाती है, वहाँ उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पे जी हम लोग को सभी चीज़ मिल जाता है, नहाने धोने का साबुन, पानी, कोलगेट वगैरह वगैरह, और प्लस खाना भी बहुत ही अच्छा है। और बच्चों के लिए दूध भी मिलती है, और जो कैंसर के बीमारी उनके लिए फल फ्रूट सब कुछ मिलता है। योगा करवाते हैं भैया सुबह 11-12 बजे, और अभी शाम को भी करवाते हैं। इसी शेल्टर होम के अंदर एक केंद्र बनाया गया है जहां पर मास्क बनाए जा रहे हैं। जो इन सभी जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर मौजूद हैं उनको ये मास्क मुहैया कराए जा रहे हैं। यहाँ हम लोग को पुलिस वाला ले आया, बोला हम आश्रम में ले चलेंगे, वहाँ आप लोग अच्छे से रहेंगे, यहाँ रोड पर है। तो हम लोग आ गए तो यहाँ हम लोग को सेवा पानी हो रहा है, तो हम लोग भी सोचे कि थोड़ा सीखे उखे हैं तो हम लोग भी सेवा पानी कर दे। बना रहे हैं मास्क दिन भर में, तो सब बना देते हैं। तो हमारी संस्था का शुरू से ये सिस्टम रहा है कि अपने अंदर हम किसी को भी नशा वगैरह संस्था में नहीं करने देते, तो इनका सब वो बाहर रखवा दिया गया और उनको प्यार से रिक्वेस्ट की कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा और यहाँ नशा आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम इनको थोड़े टाइम पे समझाते भी रहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट मूवीज़ है हमारे डेरे की, वो इनको सुनाते हैं, दिखाते हैं। हमने वहाँ पे अंदर LED वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है, तो उसको देख के हमारे सेवादार भी समझाते रहते हैं। कुछ इनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई हैं जिसके बारे में इनके विचार चेंज हो गए हैं। अब ये अपने आप ही इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह आए हैं और हमारी नशे की लत अपने आप छूट गई है। समथिंग 200, 300, 400 रुपया रोज़ का इनका नशे पे खर्चा होता था और घर का जो झगड़ा होता था ये अपने आप मान रहे हैं कि अब इससे हमारे को छुटकारा मिल गया जी। छोड़ने में दिक्कत परेशानियाँ काफ़ी झेलनी पड़ी, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। 20-22 दिन से जब से आए, 5-6 दिन तो हुई, लेकिन 18 दिन से हम ठीक ठाक बहुत खुश हैं। नशा छूट गया हमारा। आगे नशा करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ हम ऐसे अच्छे से मतलब सारी नशा छोड़ दें जी। लेकिन घर से दूर है, फैमिली से थोड़ा मतलब तकलीफ तो है, बाकी बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अपने जैसा प्यार यहाँ कोई दिक्कत परेशानी, जितना प्यार हमें यहाँ मिलता है शायद और हम कहीं संस्था में होते, कहीं धर्मशाला में होते, इतना प्यार हमें नहीं मिलता। At the centers, Sevadars treat everyone as their own family and serve with the motto, Atiti Devo Bhava. The guest is like God. At one center, a caring Sevadar helped reunite an estranged father and son by connecting them via video call. In the news, it was reported, मैं निकला अपना उसमें निकला था जी, कोई वो नहीं थी। मैं गंगानगर आया जी मंदिर में, वैष्णो माता के मंदिर में।
17 साल। किस वजह से घर से निकले? इस वजह से वैसी बड़े लड़के के थोड़ी सी तू मैं सी हो गई। नमस्कार, मैं राजेश कुमार स्पेन से बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी श्री छोटू राम 20 साल बाद मुझे राधा स्वामी सत्संग ब्यास कुरुक्षेत्र से मिले हैं। मैं दिल से राधा स्वामी सत्संग ब्यास कुरुक्षेत्र का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरे पिताजी 20 साल बाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Two days before the month of Ramadan, a few hundred Muslims took refuge at one of the centers. They were apprehensive about how they would be able to observe their religious practices while staying at a center that has its own code of conduct. But warm and welcoming Sevadars assured them that it was absolutely no problem, that they would be free to practice their prayers as they wished, and the center's volunteers would accommodate them as best as they could. In the news, it was reported, जिसके बाद लगातार ये लोग यहाँ रोजाना 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। सेवादार खुद सुबह 3 बजे सहरी अर्थात खाना बनाकर उन्हें उठा देते हैं और शाम को इफ्तार मतलब रोजा खोलने का इंतजाम भी करते हैं। खास बात तो यह है कि सत्संग घर के प्रबंधक इन सब के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल के सभी रूल फॉलो करा रहे हैं, जिसकी गुंजाइश शायद ही कहीं और होती। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब किसी दूसरे धर्म स्थल पर दूसरे स्थल के लोग इबादत कर रहे हों। हमारे ही देश की किसी मंदिर में मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते तो किसी मस्जिद में हिंदू पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तो मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर वर्षों कोर्ट में झगड़ा चलता रहा, लेकिन जिसकी दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी मिसाल राधा स्वामी सत्संग व्यास ने पेश की है, जिसका पूरा श्रेय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को जाता है, इस पंथ को जाता है। आइए सुनते हैं यहाँ रह रहे लोगों के विचार। हाँ जी, यहाँ के सेवादारों ने हमारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मतलब शहरी में भी हमें बिल्कुल प्यार से खाना दिया जा रहा है और हमारी तैयारी का इंतजाम भी हमारे टाइम पे किया जा रहा है। ऐसा मतलब जैसा चलो घर के तो हम कहते नहीं कि हमारी व्यवस्था पूरी कर सकते हैं, लेकिन जितना इनके पास से होया जा रहा है बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, रोजे वालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। अब तक आपने जो देखा वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब समझने की जरूरत है कि वास्तव में दुनिया का असली धर्म क्या है और ये असलियत में कहाँ सीखा जा सकता है। क्या सबके भगवान अलग अलग हैं? क्या भगवान का कोई घर होता है या भगवान को कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग डिजाइन और शकल में धर्म स्थलों को बनाने की जरूरत क्यों है? जिनके दरवाजे आज बंद है, क्या अल्लाह भगवान हमसे नाराज है या हम ही रास्ता भटक गए हैं? To prevent the spread of the virus, travelers arriving from other states are required by local governments to fulfill quarantine guidelines before they are permitted to go home. To implement this process, designated Radhaswamy Satsang Vyas centers are being utilized by local governments as temporary quarantine facilities in various states. In addition, there are 5 special quarantine centers established in Amritsar, Firozpur, Gurdaspur and Sangrur, where patients who have tested positive for COVID-19 are currently undergoing treatment. In the Radhaswamy Satsang Vyas Nagpur Center, one of the country's biggest COVID-19 care facilities was set up in 8 days with a capacity of 5,000 beds for the purpose of quarantine and screening. ये जो नया फैसिलिटी आप देख रहे हो, ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। Natural oxygen, sunlight, everything is there. Along with this beds, medical staff, paramedical staff will also be available. जो आप देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग से लेके मैटिंग तक और टॉयलेट, बाथरूम्स, सेंट्रल किचन, ये सब खर्चा उन्होंने उठाया, उन्होंने किया।
यहाँ पे सिर्फ ये जो बेड्स है वो हमने खरीदे हैं, बाकी खाना भी वही देने वाले हैं। मैन पावर हमारा थोड़ा बहुत लगेगा। उनको महाराष्ट्र शासन की ओर से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और इसकी ज़रूरत न पड़े ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यहाँ जितने भी हमारे कोविड केयर सेंटर में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी सस्पेक्ट केसेस और माइल्ड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस रहेंगे, उनका हम केयर करेंगे। सो इसी के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है, और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर कोविड केयर सेंटर। One of the society's charitable hospitals, the Bhota Hospital, has also been made available to the government to treat COVID-19 patients. Over the years, at the onset of major calamities in India, Radhaswami Satsang Vyas has always offered support and worked closely with the local and state governments to provide aid and relief to disaster victims. In 1947, when pre-partition riots broke out all over India, a large number of Muslims from India and Hindus from Pakistan were forced to leave their homes. The Great Master opened the Dera gates to everyone, Hindus, Sikhs and Muslims. All were welcome. No distinction was made between Satsangis and non-Satsangis. The Great Master told his Sevadars to look after everyone with great compassion. He said, "Love everyone. Even to hurt someone's feelings is considered a great sin in the court of the Lord." When India was at war in 1965 and again in 1971, Hazur Maharaj Ji ensured that Dera provided a safe haven for war victims. In the 1980s, when disturbances broke out in the Punjab, many homeless people fled to the Dera. Under the guidance of Hazur Maharaj Ji, a camp was set up providing food and shelter. In 2001, after the Gujarat earthquake, Sevadars gathered in large numbers from all over India and built 69 earthquake-resistant schools. After one of the deadliest earthquakes in Jammu and Kashmir in 2005, the flash floods in Leh in 2010, and the severe earthquake in Nepal in 2015, Radhaswami Satsang Vyas deployed hundreds of Sevadars and built insulated, weatherproof sheds for the local communities. The Master teaches us to help anyone in need, unconditionally, without concern for who they are or what their spiritual beliefs might be. By their own example, they lead us into lives of ever greater compassion and oneness. After the nationwide lockdown, news coverage from all over India reported the devastating effects the shutdown had on the rural poor. Lack of work meant people could not earn money to provide food for their families. Almost immediately, under the guidance of Babaji, Radhaswami Satsang Vyas arranged for Sevadars at their centers nationwide to organize and prepare pre-packed, freshly cooked meals for distribution to the needy throughout the country.
At Dera, about 125,000 food packets are prepared daily, and over 1.2 million food packets are being prepared at about 250 Radhaswami Satsang centers across 19 different states. So far, over a 30-day period, more than 24 million meals have been dispensed throughout the country. These food packets are distributed twice a day through local district administrations. A newspaper article reported that daily wage laborers who have been unable to work due to the lockdown depended solely on these food packets for survival. An RSSB Sevadar was interviewed in Delhi. कोविड-19 के चलते हुए हमारे को अपने बाबा जी का आदेश है कि कोई भी रात को एक भी जीव भूखा नहीं सोना चाहिए। हर एक की हेल्प के लिए किसी भी किस्म की हेल्प हो, हम डेरा ब्यास करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके बाद यहाँ से हम 1.5 लाख पैक्ड फूड कुक्ड रेडी टू ईट सभी दिल्ली के जितने इनके गरीब इलाके हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं पिछले 10 दिन से, और आगे भी जारी रखेंगे। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है और पूरी क्लीनिनेस का ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ बाबा जी के आदेश के अनुसार है कि कोई भूखा नहीं होना चाहिए, और कोई भी किसी किस्म की ज़रूरत है किसी भी आदमी को इस बीमारी के चलते हुए, तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास रेडी है दिन रात 24 घंटे उनकी हेल्प करने के लिए। हमने ये फूड पैकेट्स इनके एसडीएम्स के थ्रू आउट दिल्ली, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सब के थ्रू इन्होंने बड़ी अच्छी वैन्स लगा रखी हैं, मार्क्ड वैन्स 1 to 50। ईच एरिया में एक एक वैन जा रही है और उसमें हमने फूड लोड करके इनके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं एक एक कॉलोनी में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन? मैं तो सेवादार हूँ ब्यास का। Packed meals are prepared with the utmost care, with priority given to intensive hygiene measures and social distancing protocols. Before entering the food preparation hall, all Sevadars undergo compulsory health screenings. Everyone is required to sanitize their hands, wear face masks, gloves, and head coverings, and comply with the social distancing requirements. In the news, it was reported, हम अभी आपको अंदर ले आए हैं संस्था की रसोई में। इस रसोई से रोज़ाना 1,10,000 मील्स बनाए जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, जो बॉयलर्स हैं, खास करके दिखाएं, जो एक बॉयलर में तकरीबन 25 किलो की कैपेसिटी है एक बॉयलर की, और वहाँ तकरीबन यहाँ 10 से 12 बॉयलर्स हैं, जिससे कह सकते हैं तकरीबन 300 किलो खाना एक समय पर आधे घंटे के अंदर बन सकता है। 2.5 लाख से भी ज़्यादा पराठे रोज़ बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 400 से भी अधिक लोग इस किचन में काम कर रहे हैं, और सभी लोगों ने एहतियातन जो भी कदम हैं, ग्लव्स, मास्क, हेयर कैप्स पहन रखे हैं। जो भी खाद्य सामग्री बनती है उसे एकदम सफाई के साथ यहाँ पर पैक किया जाता है। पोर्शन साइज होता है जो खाद्य सामग्री का, उसको भी मेंटेन किया जाता है। पैकेजिंग होने के बाद 50-50 के जत्थों में उसे बांटा जाता है, और उसके बाद एक लोडिंग व्हीकल में उसे लोड किया जाता है, और वहाँ से उसे डिलीवरी पॉइंट पर ले जाया जाता है। Eventually, the government started special train services to ferry migrant workers from the cities back to their villages. But due to the lockdown situation, the catering services at railway stations were non-functional. Responding to the need expressed by the district administration, Radhaswami Satsang Byas also arranged packed meals and water pouches to be distributed at Ambala, Ludhiana, Agra, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Saharanpur, Ajmer, Bikaner, Jaipur and Udaipur railway stations. One may ask, what is it that enables Radhaswami Satsang to deliver support so rapidly in such massive volume? It is sheer love. Love of the Sangat for their master, and love of the master for his Sangat. The compassion that emanates from the love propels Sevadars to contribute selflessly without any expectation of reward or recognition. At the Radhaswami Satsang Byas headquarters in Dera Byas, huge quantities of food items are kept in storage
as standard practice. This is to provide for a visiting Sangat of up to 500,000 who stay for a few nights during the Master's Satsang programs that take place throughout the year. This puts the organization at a good starting point to provide relief in any emergency that requires significant supplies of food. Furthermore, the operations at Dera Byas are taken as a reference for the many Radhaswami Satsang Byas centers around the country. But the planning and execution of arrangements for such a large-scale activity did not happen overnight. Over recent decades, the Sangat who visits Byas, as well as the other Radhaswami Satsang Byas centers, has grown rapidly. To meet their needs, more and more centers with larger capacities have been developed all across the country. These centers have been equipped with massive kitchen facilities to cook huge quantities of food, extensive parking facilities, first aid services, and ample toilet and bath amenities. All this was designed not only to provide convenience to the Sangat who come for satsang, but also with the secondary purpose to provide a potential support for disaster relief. This was the vision and plan of the Radhaswami Satsang Byas Masters, to provide a shelter whenever required, to serve the needs of the spirit and the body for all of God's children. Today, we see the fruit of their foresight. Sevadars of all ages work round the clock to prepare the meals starting as early as 3 a.m. until the late hours of the night. More than 22,000 Sevadars are volunteering daily to fulfill Radhaswami Satsang Byas's commitment to the community. These warriors of love, fueled by the desire to serve, are producing over 1 million packets of food daily, without any thought of their own personal well-being. They give of themselves with love, faith, and courage. This is Nishkam Seva, when one serves selflessly without any desire for praise or appreciation, or for any type of personal gain. One loses himself in the joy of serving. Hazur Maharaj Ji said, Seva is always done with love and humility. Love means you want to do which pleases the other person. When you please another person, and that reaction will be that you'll be more happier to do seva. There's more happiness in giving than taking, more happiness in donating than accepting any gift. More happiness in helping somebody than getting a help from anybody. The pleasure that you get by helping somebody, making somebody happy in life, nothing to compare with that pleasure. So seva is always done with love. Otherwise it's not a seva. Throughout this crisis, public officials have expressed their gratitude to Radhaswami Satsang Byas for their help and support in this time of need. जो दूसरे हैं हम रख रहे हैं इसमें, तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं. राधा स्वामी सत्संग बड़ी मदद कर रहे हैं. हमारे अपने सारे सत्संग भवन उन्होंने दे दिए, कुछ लोग वहाँ रखे हैं. शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से हमने बाबा जी ने राधा स्वामी और बाकियों ने ये काम ये हमें सपोर्ट की है इस काम में. In situations like this, it is always the master and the sevadars who are grateful.
It was a bittersweet moment when the time came for some of the migrant workers to leave. Sevadars helped the authorities organize the departure of the migrants to their respective destinations. They expressed their gratitude to the district administration, migrant workers, and to the people accommodated in the isolation camps, as well as those who provided the Sevadars the privilege of serving them with food packets. Their objective was to serve humanity. But in the end, it is the Sevadars who are the fortunate beneficiaries. The greatest reward of Seva is in the contentment and happiness that one feels when one is given an opportunity to serve. This reminds us of Hazur Maharaj Ji's words during the I camp. Sisters, this whole camp is based on love and service. Dedicated service by doctors, dedicated service by the Sevadars, by the technicians, by everybody. Without dedication, you can't make such a camp a success. And I would rather we feel fortunate that these patients give us opportunity to serve them. It's a very rare opportunity to serve anybody. And we are grateful to the patients that they give us opportunity to serve them. To be a part of the immense seva undertaken by Radhaswami Satsang Byas, and as the guiding light to his Sevadars, Babaji has been travelling tirelessly and extensively from centre to centre by car. He has visited centres across the states of Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Haryana, Delhi, Rajasthan, Chandigarh, thanking the migrants for providing the opportunity to serve them. He also asked each and every one of his Sevadars to take care of themselves while doing their seva, to maintain social distancing besides following all the other health protocols. He thanked the Sevadars, in person and through video calls, for their loving helpfulness and generosity of spirit. With the entire nation under lockdown, in the middle of a global pandemic, they put the need of their fellow brothers and sisters ahead of their own. Babaji said, "I haven't seen so much love of the Sevadars. They are so happy in doing seva and being part of the large chain in helping humanity. There is no department where we are lacking in volunteers. Everybody is coming on their own. Housewives, teachers, engineers, everybody has joined in to prepare packed lunches to be sent outside." Despite the challenging circumstances, every Sevadar has had a unique and unforgettable journey. A learning experience that taught each of them that no matter how great a tragedy, the power of love can turn any difficulty into something positive. Supported by God's grace and the Master's love, through their selfless service, they lifted the hearts of many in their hour of need. बिनवंत हूँ कर जोर के सुनिए कृपा निधान साध संगत सुख दीजिए दया गरीबी दान सुरत करो मेरे साइया हम हैं भवजल माहे आपे ही बह जाएंगे
जो नहीं पकड़ो बाहें, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तेरी सेव, निस दिन तेरी सेव।